Ashish Kyal here. Warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And it's Friday at 4. It's fantastic to have you all here. And we are going to look at markets here. Market में अगर देखेंगे ये वीक में हुआ क्या है and what is the strategy you have to adopt और आने वाले दिनों में क्या लग रहा है markets को, is it going to go up, is it going to come down, or all of these things we are going to look at it. I just want to know that you are able to hear me, see me out clearly. Chat enabled है, आप लोग chat पे लिख सकते हैं कि आप सुन पा रहे, देख पा रहे. And it's very warm welcome, Nalini. Great to see you, Vidyut, Manan, everyone. It's fantastic. Anil, Avtar, Bal Kumar. क्या बात है, आप लोगों को मिलके मजा आता है. आप सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं. I'm just checking if we are also live on YouTube. People who are watching this on YouTube, do not forget to like, share, and join me on the YouTube. Here is the YouTube link. Join me on the Zoom platform. Here is the Zoom link I'm sharing across with all of you, and it's fantastic. We are 55,000 के पार on YouTube. तो आप लोगों ने 55,000 YouTube को पहुंचा दिया, and Twitter is already around I think 56,000 up. So it's fantastic. Thanks for showing that interest, because उससे पता चलता है कि आप लोगों को ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, you people are loving it. That's what it is showing, and it's always wonderful. Gaurav, it's glad to have you here, and he's saying, sir, your tweets webinars really helped to navigate extreme volatility. ये वीक में बहुत volatile था. Your levels inspired me to catch the trend. विद्युत कुमार चंद्रा, क्या बात है. तो चलिए, अच्छा है कि मैंने ट्वीट किया था, बल्कि जिस दिन मार्केट में फॉल आया था कि वेव एफ नीचे जो था, उसके बाद में वेव जी वापस लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है, एंड वी आर नियर टू दैट लेवल. ऐसा लग रहा था बीच में एक डिप आना चाहिए, एंड यहाँ पर which we are now looking at is the clearly very interesting way of looking at things, where we are looking at markets went all the way on the downside, created low at 21,200, rallied by 2,000 points in just 3 days again, and up back towards that lifetime high level of 23,300 levels. और ऐसे में अभी क्या करना चाहिए वो हम शुरू करेंगे. उसके पहले मैं एक बहुत ही क्विकली पोल लेना चाहता हूं आप लोगों से, समझने के लिए कि व्हाट डू यू थिंक इज द निफ्टी ट्रेंड इन द कमिंग वीक. आने वाले वीक में क्या लगता है निफ्टी का ट्रेंड होना चाहिए. इज इट गोइंग टू बी अप, इज इट गोइंग टू बी डाउन, व्हाट इज द ट्रेंड दैट यू थिंक इज गोइंग टू बी देयर फॉर निफ्टी in the coming week. You can participate, every one of you can participate in the Nifty poll that we are running right now. And यहाँ पर we can clearly see there are so many of you who are still expecting. I am not going to reveal the answer, नहीं तो सभी लोग वो मार्क कर देंगे. We will discuss about Neo Wave. We are going to do that. So let me end the poll very quickly. And people on YouTube, if you want to join me on the Zoom platform and participate in the poll, you can do that. I have just ensured that I'm sharing the result. आप देख पा रहे हैं, so 63% of the people are expecting that the market is going to go on the upside. So 37% are expecting market should come down by next Friday. So that's the poll. Let me just stop the screen share, the poll sharing, and let me go on the chart and talk about कि क्या लग रहा है मार्केट में, यहाँ से क्या होना चाहिए. Let me open up my trading view very quickly. And people, one more thing before I move on, you can also follow me on the WhatsApp community. I'm just sharing across the link of the QR code of the WhatsApp community so that you are with me. साथ ही में एक और चीज का ध्यान रखना, there is an app, and on the app we are also going to be launching across some offers for the recorded courses. So बहुत सारे जन पूछ रहे थे कि छोटे कोर्सेज अगर करने हैं तो कैसे करें. तो ऐप है, उसके ऊपर एक रिकॉर्डेड कोर्सेज भी होगा. तो पहले मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का QR कोड आपको दिखा देता हूँ. वहां पर जाके यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, एंड देन विल मूव ऑन टू द मार्केट ट्रेंड्स. We'll look at markets. And Shalini, glad to see you also here. It's always fantastic to have the ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो ज्वाइनिंग इन. बहुत सारी चीजें सीखते हैं हम यहाँ पे, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस भी करेंगे. सो ये QR कोड है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो गिव मी अ थम्स अप so that I know you have joined the WhatsApp community. And
you are kicking there. So we will keep getting the research. Let me stop the screen share now very quickly. और एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि मार्केट अगर अभी देखेंगे, आई थिंक इट्स not only Nifty that has rallied. If you look at the mid cap, small cap stocks also, वो भी काफी अच्छा रैली हुआ है. ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड रैली है. और खास करके जो सेक्टर पे मैं ध्यान देने वाला हूं, ये मैं स्टॉप कर रहा हूं स्क्रीन शेयर. द सेक्टर दैट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ इज आईटी सेक्टर, which is now showing a very strong reversal. So IT, FMCG and pharma. These are the three sectors हमने Wednesday भी discuss किया था with all the Brahmastra participants, and that's what it looks like that. यहाँ पर let me now very quickly share across the screen, and let me just go on the chart. I'm going to open up my trading view. We are going to look at the chart. What is the overall wave pattern? What is the neo wave suggesting? साथ में क्लब करेंगे टाइम साइकिल के साथ, और बेसिस ऑफ साइकिल थियरी क्या लग रहा है, वी विल बी लुकिंग एट दैट. व्हाट इज द ओवरऑल वेव पैटर्न विद टाइम साइकिल इज सजेस्टिंग. सो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन वेरी वेरी क्विकली विथ ऑल ऑफ यू. ये रही स्क्रीन, और आप देख पा रहे हैं एवरी वन ऑफ यू? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, लवली. तो यहाँ पर जो, अगर मैं जूम आउट करता हूँ, तो बहुत सारे जन पूछ रहे थे कि ओवरऑल ब्रॉडर काउंट क्या है, व्हाट इज द बिगर पिक्चर. सो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस द वीकली चार्ट with all of you. जो हम देख रहे हैं, this is Nifty weekly time frame chart which we are looking from the perspective of and it completed wave E on the upside. That is, यहाँ पर जो wave E लिखा हुआ है दोस्तों, वो कंप्लीट हो चुका है. वो क्या wave E है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. This is the overall broader chart with time cycle. This is an 85-week time cycle. Are you able to see this? And यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, we have already completed E, and the entire fall that we see on the downside, we might be seeing this. Okay, that's the trend line where we are as of now. And ये जो नीचे का fall था, this is nothing but wave F. I'll explain you all those things. हमने लास्ट वीक की सूत्र ऑफ वेव्स किया था. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो मूवमेंट था, this is an 85-week time cycle. Are you able to see the 85-week time cycle? And this cycle I've been applying for many years, and it has been an exceptional cycle. So very interesting things I'm going to talk about right now on the Nifty weekly time frame. So Nifty weekly chart along with medium term forecast. What do you see here? Anyone who wants to guess? जो हमने last week किया था सूत्र ऑफ वेव्स में, there were many participants. Are there participants from the सूत्र ऑफ वेव्स weekly chart जो हमने किया था with medium term forecast along with 85-week time cycle? ओके, यहाँ पर जो टाइम साइकिल आप देख रहे हो, दैट इज एन 85-week साइकिल विच इज सजेस्टिंग 20 February 2025 एज important month. Okay, G is going on upside. Exactly. So what we are looking at is the entire picture. We are trying to look at the broader picture right now. We are trying to look at the bigger time frame charts. वो हम यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, the bigger time frame chart and what is happening around on the bigger time frame. So अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये लो बना था कोविड के वक्त का. So this was the low which we can see that was formed during the COVID times, and post the low that was formed in the COVID days. उसके बाद पूरा move आया, we completed X, then again a move, we completed a second X, and this is the third pattern which is going on the upside. And over here we can clearly see A, B, C, D, E done, wave E done. And अगर आपको ध्यान होगा, हमने last Friday को बात की थी before election that F wave should be 10% of, because B was 10% of the fall. And अगर आप देखोगे तो F was exactly in terms of price
it covered the amount of price distance that was expected in the form of wave F, और अभी हम वेव जी के फॉर्म में चल रहे हैं एंड यहाँ पर okay, there is a comment I was not able to enter because the Nifty was down and 10 to 12% so slow correction. So exactly now the challenge happens because of the event, right? Event के कारण जो फॉल हमें 2 महीने में आना चाहिए था, वो ही फॉल इवेंट के कारण एक दिन में आ गया. That's the challenge that everyone faces when we are in an eventful week. But if you look at very closely, are you able to see this chart? If you look at very closely and if you just zoom in and look at the weekly candle, we have still not seen any kind of close below the prior week low, despite of a huge selling. I'm not saying stop loss trigger नहीं हुआ होगा, stop loss definitely trigger हुआ होगा, लेकिन weekly bias negative नहीं हुआ. Despite of the huge selling, Nifty came back to the level where it was. यहाँ पर अभी हमें डेली चार्ट पे चल के देखते हैं. If you look at the daily time frame chart, let me go on the daily time frame chart and let us just look at what's happening on the daily time frame chart. If you look at the daily time frame chart, the target which we discussed last Friday, were you there in last Friday's webinar at 4? If you looked at the daily time frame chart, we discussed about 23,290 as the area where wave E should complete. And Seema, great to see you also here. And wave E got completed at 23,290 odd levels. From there, wave F should mimic wave B. Now, let me explain you the diametric pattern which we did last Saturday, Sunday in a very detailed fashion again. For this can be a revision for many of the super wave participants. So, यहाँ पर diametric pattern कैसा होता है? It's a 7-leg correction. We can see this as the pattern, and this is what I am drawing right now. And we have wave A. यहाँ पर wave A आया. Then नीचे wave B. We got wave C on the upside. We got wave D on the upside. यहाँ पर E आया. This is like a pattern. F and either wave G ऊपर आना चाहिए. ठीक है? That's what we look at. इस पैटर्न में can someone tell me G इक्वालिटी कितना होता है? G टेंड टुवर्ड्स इक्वालिटी विथ व्हाट? अरे यार आप लोगों ने अटेंड किया था लास्ट वीकेंड पे, याद नहीं है? G इक्वालिटी विथ A. फैंटास्टिक आदित्य, गौरव. F का इक्वालिटी क्या होता है? F टेंडिंग टुवर्ड्स इक्वालिटी विथ B. E टेंड्स टुवर्ड्स इक्वालिटी विथ C. ठीक है? That's the basic criteria that we look at. E tends towards equality with C. Now, if you're looking at this entire concept, यहाँ पर अगर मैं measure करूँ wave B को and wave F को, now it was one day affair, but we can clearly see that this entire one day affair got over and we are seeing a sharp move. Earlier मेरा expectation था triangle pattern का, which I'm still not completely ruling out कि ये triangle नहीं बन सकता है, but looking at the magnitude of the move, मतलब यार एक दिन में 700 पॉइंट की रैली, दूसरे दिन 300 पॉइंट, आज वापस से अगर देखेंगे तो निफ्टी में 500 पॉइंट, नियरली 500 पॉइंट्स की रैली. इट्स क्रेजी. निफ्टी मार्केट डज नॉट मूव इन सच ह्यूज मैग्नीट्यूड. और मोदी जी ने कहा था 4 जून के बाद में मार्केट में तेजी आएगी, तो 4 जून को तो फॉल आया, 4 जून के बाद में तेजी तो आई है, लेकिन कितने लोग राइड कर पाए वो क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पर. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे the overall movement that you are seeing on the upside is in the form of wave G. So सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, या ट्रेंड तो पॉजिटिव, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है ट्रेंड पॉजिटिव है. अभी जो फॉल आएगा यहाँ से, वो फॉल में ज्यादा सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. जो मूव एग्जिट पोल के वक्त आया था, देयर वर मेनी रिटेलर्स हु वर अ पार्ट ऑफ दैट रैली
who were participating and who bought on the exit poll day. बहुत सारे जनों ने पोजीशंस बनाई थी, लेकिन जब ये क्रैश आया, ओवरऑल क्रैश नीचे की ओर आया, सो द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई थी वो सबकी पोजीशंस कट हो गई। इधर ब्रोकर्स ने सेल ऑफ कर दी या पैनिक होके लोगों ने सेल ऑफ कर दी। Now after that, again a sharp move on the upside. So people have not participated. Most of them. Can you be honest with me and tell me, did you participate in this up move? Most of the traders, most of the retailers ने participate इस up move में नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं था यार, रिएक्शन टाइम ही नहीं था। So there is nothing wrong about it. नहीं किया तो नहीं किया, क्योंकि there was no reaction time at all, which means यहां पर अगर फॉल आएगा तो आप लोग बाय करने की वेट करेंगे। यहां पर अगर फॉल आएगा तो आप लोग बाय करने की वेट करेंगे, या अगर पार्टिसिपेट करना था तो आप पुट बेच के पार्टिसिपेट कर सकते थे, या अभी भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस आर वेरी ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट which can help you to participate and help. Of course, I am a part of this up move by way of सेलिंग ऑप्शंस। हमने परसों ही डिस्कस किया था मेंटरशिप प्रोग्राम में। सो एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस अप मूव इज बाय वे ऑफ selling option. Vinay Chawda, great to see you. He closed his position with 400 points in Nifty 22,800 call. और मैंने लिखा भी था ट्वीट पे 22,000, अगर आपने देखा होगा लेवल्स, अगर 22,800 ब्रेक होता है निफ्टी पे तो फिर से अप मूव शुरू होगा। 22,250 का भी लेवल लिखा था, वो ब्रेक होगा तो फिर से अप मूव शुरू होगा, और ये रिज्यूम होता चला गया ना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है टाइम साइकिल का। ये जो जोन है, दिस आर द टू जोन दैट यू आर सीइंग over here. So are you able to see the zone here? This zone is a 55 days time cycle. Now 55 days time cycle क्या होता है? This is the 55 days distance between two cycles. So 55 days is the distance between two cycles. So the black line is the cycle low. This is the zone where we usually see markets forming the low around that area. तो ब्लू और रेड के बीच में साइकिल लो निफ्टी यूजुअली बनाता है, और वहां से हमें रैली मिलती है। अगर हम इसी के आसपास कॉन्सेप्ट को देखें तो प्रीवियस साइकिल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके आसपास यहाँ पर एक लो बना एंड निफ्टी में रैली देखने को मिली हमें। इफ यू लुक एट दैट एंटायर साइकिल कॉन्सेप्ट, अगेन वी फॉर्म्ड अ लो अराउंड दिस एरिया एंड वी रैलीड। यहाँ पर माइनर विपसॉ हुआ था इस जोन में, बट वी इवेंचुअली वेंट ऑन द अपसाइड। वी फॉर्म्ड अ लो अगेन अराउंड दिस एरिया ऑफ अ 55 day cycle and we rallied, which means the overall time का जो लो है is going to be on the upside for next 10 to 15 days. ठीक है, साथ ही में अगर आप देखोगे यहाँ पर वी आर सीइंग एवरी सिंगल टाइम देयर हैज बीन करेक्शन इन दिस टाइम जोन, वी हैव सीन अ रैली दैट इज हैपनिंग। सो ये ब्लू और रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग टाइम cycle. Are you with me? Are you guys understanding this concept of time cycle? So what we are doing is Nifty 55 days time cycle is again in the buy zone. So buy zone का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर जाके लॉन्ग करना है। I'm just saying from medium, from monthly perspective. Okay, 5 is in buy zone from monthly या from 2 weeks perspective आप कह सकते हो, rather 2 weeks perspective. And यहाँ पर अगर आप देखोगे low was formed at 21,200 levels, and we have also seen positive price action on lunar cycle day. So which is turning the overall bias on as buy on dips, क्योंकि हम वापस से lunar cycle पे if you have checked in the previous lunar cycles, if you have checked in the prior lunar cycles, every single time in the prior lunar cycles we have been falling from the top here
until the low was formed at this point of time. यहाँ से again trend changed. If you remember, I talked about it that this time on Purnima we rallied, this time on Amavasya again we rallied, which means that now the relationship of price with the lunar cycle is again on the buy side. Are you with me? The relationship of lunar cycle with prices is on the buy side. The 55 days time cycle is on the buy side, and wave G is also on the buy side. Now, how much will this wave G go as per the pattern? How much will this wave G go? This wave G will tend towards equality with A. Shall we come out with the target of wave G? Okay. यहाँ पर मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ टारगेट क्या है. ठीक है. बहुत सारे जन जो नए यूजर्स है जिन्हें वेव थियरी नहीं पता है शायद, so for them let me just share across very quickly. So how much was wave A is what I'm going to measure here. So wave A कितना था? If we measure this is wave A which was there on the upside. So यहाँ से यहाँ तक का, if I say I am going to use a box, a rectangle box. So if I measure this is how much was wave A. Now, assuming wave F was just a one-day affair, that is still an assumption, which will get validated once we touch the lifetime high levels. So यहाँ से अगर मैंने ऊपर measure किया, approximately is what I am saying. Wave G जो फिलहाल चल रहा है, that should be around 23,520. So 23,500, 23,486 के आसपास का wave G हो सकता है. That is an approximate measure. So we have an approximate measurement of 23,500 as the level where this rally can start showing some kind of a topping out process. But again, the time taken by this movement is the time that ideally ongoing wave G should take. तो हो सकता है यहाँ से हम ओवरऑल जो पाथ, लेट मी गो ऑन दी 1 hour टाइम फ्रेम नाउ. If you look at the 1 hour time frame, the overall trend line this is the 1 hour time frame, internals of that is shown. यहाँ पर complete हुआ. Once we cross back above, so I am still not ruling out the possibility कि भाई ये जो move है ये शायद wave F का triangle का B हो सकता है. But if the high is taken out now, 23,330, then there will be a very high possibility कि जो fall था was complete at the low and यहाँ से नया trend ऊपर का शुरू हो चुका है. Now, after such a steep rally that we have seen, we are definitely in an overbought zone. तो यहाँ से इस लेवल पे बाय करने में पैसा बनाना मुश्किल होगा. Now, if this is going to be, can it be irregular flat? Possible है, not completely ruled out. तो इसीलिए एक फॉल तो चाहिए मार्केट में एंटर करने के लिए. So, are we going to touch the lifetime high levels and then we will fall? Let's see how it happens. But from here, we might just go up and we should see a move back on the downside. Post this move, which comes around here, 22,800 is a very classic support level of 43 period of time cycle. If we come back around this is where, say, A of F. A of F, yes. That's this can be B of F, and we might complete the C of F around this area. So यहाँ से miss by 13 points, yes. So this is still possible. अगर ऐसा होता है तो जो G का टारगेट है ना वो और ऊपर का जाएगा. मतलब 23,500 G का टारगेट फिलहाल के लिए हमने रखा है. लेकिन अगर यहाँ से हमें डिप मिला, एक प्रॉपर एक्यूमुलेशन का मौका मिला, तो यहाँ पर बिग प्लेयर्स विल अगेन एक्यूमुलेट. They will accumulate the stock, they will accumulate indices, and from there we will again get an opportunity to then ride the move
which goes on the upside in the form of wave G. So overall expectation हमारा ये है कि we will be eventually moving on the upside and we should possibly trade in this fashion. So यहाँ पर कोई भी अगर आपने राइड नहीं किया, what is the easiest way to ride? Can the Brahmastra participants tell me what is the easiest way to ride if you are not part of this trend? Even now, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड के पार्ट नहीं हो तो भी आप ऑप्शंस को यूज करके राइड कर सकते हो. फैंटास्टिक शालिनी, शशांक, यू कैन सेल पुट ऑप्शन, नॉट बाय कॉल ऑप्शंस, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा. आनंद, हिमालय, फैंटास्टिक, इट्स ग्लैड टू हैव यू इन द ग्रुप. तो यहाँ पर हमें पुट ऑप्शंस सेल करके ओवरऑल मार्केट का मूव जो है वो ऊपर में कैप्चर किया जा सकता है. सो दैट्स द ओवरऑल ट्रेंड बाय लुकिंग एट दिस चार्ट. I'm also going to share across one very short-term chart which is going to be on a 43 period time cycle. Do you want to see that? 15 minutes का, या it's becoming too much of ज्ञान? देखिए, मैं ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता हूँ आप लोगों को, मैं तो खाली बता रहा हूँ जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है बेसिस ऑफ वेव थियरी और बेसिस ऑफ टाइम साइकिल या लुकिंग एट दोज थिंग्स. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे I'm just going to share across. I'm going to show you a 15 minute of time cycle which is working fantastic. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्विकली वो चार्ट पे ले जाता हूँ. If you are able to see my screen here, okay. ओके, यहाँ पर दिख रहा है चार्ट आप लोगों को? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, एवरी वन ऑफ यू? तो यहाँ पर देर इज अ साइकिल विच इज अ 15 मिनट्स टाइम साइकिल. ठीक है, एंड ये 22,800 का सपोर्ट मैंने आज ट्वीट भी किया था और कल मैंने एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश किया था. So if you look at the overall cycle, this is a 43 period. Okay, everyone, are you able to see this? अगर आप देखेंगे every 43 period there is a tendency of prices to go up. That's a 15-minute time cycle that I'm showing you right now. Every 43 minute Nifty has a tendency to go up. So Nifty 43 period of time cycle is helping to understand the zone where there can be a positive price action. Understand the area of positive reversal. So इस एरिया से नेक्स्ट डेट हमें मिल जाएगी, नेक्स्ट डेट और टाइम हमें मिल जाएगा. सो नेक्स्ट डेट और टाइम क्या है? यहां से अगर हम देखेंगे, द नेक्स्ट डेट एंड टाइम इज 10th of June 1:45 is 10th June. ठीक है, which is Monday, and the time that you can see here is नीचे दिख रहा है आपको 1:45 PM. So 10th June 1:45 PM is the next 43 period cycle का लो. तो अगर निफ्टी यहां से निफ्टी नीचे आता है तो हम ये कह सकते हैं that overall now again I will be looking forward for a buying opportunity in this area, in this zone. So what I need now is a dip, that is for sure, क्योंकि creating fresh long positions is very difficult. Risk reward बैठेगा. If there is no risk reward, I don't buy at this level. I am selling put options and I'm riding the trend. That is absolutely perfect. But यहाँ से अगर मुझे dip मिल गया, now dip can be towards 23 or below that, we will yet to see. Dip मिल गया तो setup will be the best setup as per wave theory, as per time cycle, and also as per the entire 15-minute chart. So what I need now is a dip on the downside. If it comes in the first half of Monday, that's how it looks like. यहाँ से अगर मुझे dip मिला, I will have an opportunity to check around this time of
क्या टाइम है, लेट मी जस्ट शो यू दिस टाइम. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन अगेन फॉर यू ऑल. दिस इज Monday, which is 10th June, 1:45. So Monday 10th June 1:45 PM को अगर डिप मिलता है तो आई एम गोइंग टू बी लुकिंग एट दैट टाइम पीरियड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर अगेन, प्रोवाइडेड देयर इज अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन. तो वो टाइम पे आग बंद करके बाय नहीं करना है, वो टाइम पे देखना है कि क्या ये स्विंग हाई, द स्विंग हाई is getting taken out, which happened here. Okay, if you look at this time also, can you see this? Guys, are you able to see this trend? On the time cycle, there is a breakout of a pattern that has been happening on twice the occasion. From the first one, ये मालूम है कितने पॉइंट्स का रैली था? This was 800 points rally. Clearly 800 points rally. And from here, if you check, from 22,800, we have again rallied by nearly, okay, closing basis पे 470 points. You can clearly see that 470 points of up move. यहाँ पर हम clearly देख सकते हैं. So you can see the from the time how you are able to capture. तो वहां पैटर्न भी बना, प्राइस एक्शन एरिया मिला, प्लस वहां पर प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेकआउट भी मिला. So both of these things are clubbed together, and by clubbing both of these techniques together, you can possibly get those kind of trends. Then अगर आपने FLD का कॉन्सेप्ट किया होगा जो अभी हम ब्रह्मास्त्र में करेंगे वापस से, are there current batch ब्रह्मास्त्र participants will be doing those concepts, and that FLD is working fabulous on even on this chart, even on the downside, even on the upside. If you use FLD on a 15 minutes time frame, it has been very well working. So वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मास्त्र में. एंड सो इन अ नटशेल, संक्षेप में अगर मैं आपको कहूँ, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है. यहाँ पर एक फॉल आना चाहिए, फॉल हो सकता है 300 400 500 पॉइंट का है, बट वो फॉल के बाद में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो क्लासिक होगी, और 23,500 टारगेट है ऊपर में, और ये फॉल डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट वेव जी है वो या तो लो से शुरू हो चुका है या अभी शुरू होगा. अगर वो शुरू होने वाला है, विच मीन्स 500 पॉइंट नीचे आया, तो 22,800 से हमें ऊपर में बहुत सॉलिड मूव मिलने वाला है 2000 पॉइंट्स का. तो वो देखेंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे. पहले तो यहाँ से एक फॉल चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रहा आप शॉर्ट करो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर आपको फॉल मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी. दैट्स व्हाट द ओवरऑल क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन इज. इज इट इंटरेस्टिंग गाइस व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट? एंड साथ ही में एक और चीज की मैं बात करने वाला हूं आज के दिन में. हमारा एक ऐप है आशीष क्याल के नाम का ऐप, उसकी लिंक विल बी शेयर्ड अक्रॉस बाय माय कलीग. मैं क्यूआर कोड भी दिखा देता हूं आप लोगों को. वो ऐप के ऊपर हमने शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च किए हैं, विच इज ऑन बॉलिंगर बैंड केएसटी, कि बॉलिंगर बैंड और केएसटी की स्ट्रैटेजी कैसे आपको ट्रेड करनी है. इफ यू वांट टू डू दैट, इफ यू वांट टू हैव एन learn about trend line breakout methods with price action, so पावरफुल ट्रेड सेटअप का एक कोर्स है वो आप ले सकते हो, या प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कोर्स है वो ले सकते हो. एंड यू देयर आर मेनी सच short 3-4 such courses from which you can pick up. And you know the best part, there is absolutely 30% off on the discounted price, so there is nearly 70-80% off at which you are getting those courses. So you can say that निफ्टी का 2000 पॉइंट्स का रैली आएगा, ऐसा कह रहा हूं मैं. देखते हैं, यहाँ से एक फॉल चाहिए, उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में वापस से. आई डोंट वांट टू बी टू बुलिश एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. सो एक बहुत ही क्विकली मैं क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वो ऐप को डाउनलोड करिए. हैव यू डाउनलोडेड द ऐप नाउ? इफ यस देन लेट मी नो, बिकॉज द लिंक इज शेयर्ड अक्रॉस. वहां पर कौन से कोर्सेज है जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है विच कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग. एंड लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली the link which is here with me. Let me just open up and just give me a second.
आई एम गोइंग टू डू द स्क्रीन शेयर, और आप लोगों ने अगर ऐप डाउनलोड किया, वहां पे कोर्स सेक्शन है, वो कोर्स सेक्शन में कूपन है। कूपन कौन सा है, माय टीम विल गिव इट टू यू, नहीं तो ऑलरेडी आपको कूपन दिख रहा होगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द कूपन फॉर एडिशनल 30% ऑफ। Okay, the course is already discounted, plus an additional 30% off is what you can clearly see that. So you just have to ensure to download the file, and I'm just sharing the link very quickly with all of you from where you can download the app. So this is a Play Store link, and यहाँ से आप ऐप पे जाइए। दूसरी चीज, वहाँ कम्युनिटी भी है, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कम्युनिटी ऑफ द ऐप। तो वहां पर आप पोस्ट भी कर सकते हो, और पोस्ट करने के बाद में वहां पर डिस्कशन हो सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैंने बना रखी है, और वो कोर्स की प्राइसिंग कम रखी है काफी, 2600 से लेके 7-8,000 तक के कोर्सेज है। एंड द कूपन कोड दैट यू कैन यूज इज AKTG30। वहां पर कूपन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, आप जाके AKTG30 पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पर ऑलरेडी जो कूपन दिख रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं। सो लेट मी नो वंस यू डाउनलोड इट, आई कैन ऑल्सो चेक कि यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, एंड व्यू ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारे के सारे कोर्स जो मैं बात कर रहा हूँ वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च कर रखा है मैंने ऐप के ऊपर। यू कैन सिलेक्ट द फर्स्ट वन विच इज पावरफुल ट्रेड सेटअप कोर्स, जिसमें ट्रेंड लाइंस, चैनल, सिंपल डाउ थियरी, स्टॉक सिलेक्शन मेथड, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, ये सारी चीजें। द सेकंड वन इज प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो आप सेकंड वाला कोर्स देख सकते हैं, वो बॉलिंगर बैंड KST है इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन आप निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन देयर इज अ बंडल कोर्स which is combination of both of those courses, and that is also there at a very discounted price. So you can simply download these courses and you can avail that at a much lower price. Okay, so app अगर डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, and it's going to be very interesting. Once you have the app, you can see and select what works for you, and it is a very clear strategy courses. और साथ ही में एक मैं बहुत क्विकली पोल लेना चाहता हूँ फॉर यूजर्स हु वांट टू लर्न और बी विथ मी फॉर द ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम, और इफ यू वांट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ, बिकॉज हमारे पास में रिकॉर्डिंग्स नहीं है फॉर त्रिशूल और सूत्रोवेज, बट स्टिल इफ यू वांट दोज रिकॉर्डिंग्स देन आई कैन ऑब्वियसली बी हेल्प यू आउट विद दैट। सो यहाँ पर मैंने बहुत क्विकली पोल लॉन्च किया है, प्लीज पार्टिसिपेट इन द पोल, एंड समवन इज आस्किंग फॉर द QR कोड। लेट मी जस्ट शो यू द QR कोड अगेन ऑन दैट। यहाँ पर QR कोड मैंने वापस दिखाया आप लोगों के लिए। निफ्टी वीकली कैंडल हैंगिंग मैन, क्या फर्क पड़ता है, जब तक नीचे से देखो ना, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग था, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, निफ्टी वापस वहीं पहुंच गया। हैंगिंग मैन का इंप्लीकेशन तब होता है जब उसका लो ब्रेक होता है। अभी लो है 21,200 पे, वो ब्रेक होगा कब पता नहीं। सो हैंगिंग मैन का इंप्लीकेशन नहीं है फिलहाल के। ओके, यहाँ पर आर यू विथ मी? ठीक है, ओके, इज देयर एनी अनदर क्वेश्चन? लेट मी जस्ट पिक अप अनदर क्वेश्चन दैट यू माइट हैव। आई एम यूजिंग एन इंडिकेटर ओनली विथ वेव थियरी और टाइम और वेव थियरी के बाद में आई एम यूजिंग दैट इंडिकेटर which is there, and please share it across with people on YouTube also, so they can also download it across and share that across with every one of them. Okay, and there is another question here, sir. I want to subscribe for powerful trade setup. What do I learn? Powerful trade setup course अगर आप लेते हो, you will have an amazing way of seeing the markets in a trend line intersection fashion. मतलब कैसे मल्टीपल ट्रेंड लाइंस इंटरसेक्ट होके आपको एक सेटअप मिलता है, वो पूरा एक्सप्लेन किया गया। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन पावरफुल ट्रेड सेटअप कोर्स, अगर आप ऐप पे चेक कर रहे हो तो। ओके, नीलम, मितेश, बैंक निफ्टी व्यू इज अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट निफ्टी व्यू इज। बैंक निफ्टी is also completed wave F on the downside. We started wave G, and that's what we are looking at it. For options buying, you might want to avail options mantra वाला पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो योगेश। वो ऐप पे नहीं है कोर्स,
पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. माय टीम विल हेल्प यू आउट विद दैट. In daily time frame, there is still no faster retracement. Yes, that's why I'm saying this can be wave F ongoing. It can be wave B of an F, and we might have a C of an F, which is still possible. Ruled out नहीं है, तो देखते हैं. Is it better to buy futures or ITM option? I prefer buying ITM options because it's making me take a lot of positions. So I prefer buying ITM options. Awesome, guys. चलिए अभी आज के लिए यहीं पे एंड करता हूँ. आई हैव टेकन द पोल एंड इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन एंड इट्स lovely and have a fantastic time and see you on the app. कम्युनिटी पे मैं जा रहा हूँ, चैट कर सकते हो आप मेरे साथ में. वहां पर आप मेनू में जाएंगे तो वहां पे चैट ऑप्शन भी है, तो आप वहां पर चैट भी कर सकते हो या कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर on the app. So you can definitely do that. And have a wonderful time, guys. Thank you very much for joining in. Ashish Kyal signing off.